Good morning, dear students. In today's session, we will study our third unit in which we have already seen about the number system. Now we are supposed to learn about the logic gates. These logic gates are coming in the Boolean algebra. Why? Because these are understandable only for 0 and 1 numbers. And we are saying 0 and 1 numbers as a binary. So the mathematics algebra which will give us the calculation of 0 and 1, it will give the multiplication, it will give the subtraction, addition of 0 and 1, that we are calling as the Boolean algebra. So firstly we will see here about the logic gates. There are different types of the logic gates. These are nothing but three types: basic gates, universal gates, and the special gates. So, and, or, not. These are nothing but the basic logic gates. If you are having the notebook, you can write because they will ask the question on numericals. Already, I have given you the notes in which I have mentioned if we are having the logic gates, these are nothing but and or not. These we are calling as the basic logic gates. After that, you can see here the fourth one, NAND and NOR. These we are calling as the universal logic gate. Why we can say this as a universal logic gate? Because as you know, we are calling O positive blood group as universal donor. Why? Because O positive blood group we can give to any blood group. If anyone require the blood, we are giving. That's why we are saying that as a universal. Like that, similarly, in the digital electronics, if we want to make any Boolean algebraic circuit, then we can build that circuit by using NAND gate or the NOR gate. That's why we are saying NAND and NOR, these are as a यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स. हम नैन और नॉर को लॉजिक गेट्स यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमें यदि नॉट गेट बनाना है, कोई भी गेट बनाना है, या फिर कोई भी एक आधी बुलियन की सर्किट बनाना है, तो बाय यूजिंग नैन और नॉर वी कैन मेक. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग both NAND and NOR as a universal logic gate. After that, you can see here sixth one, XOR. After that, there is one XNOR, XNOR, XOR and the XNOR. Both these we are calling as the special gates. If you see here the symbol which we are showing for the XOR, this we can denote mathematically as X in circle plus sign Y. This is the mathematical symbol for XOR. ये जो सिंबल है प्लस और उसके अंदर सर्कल, वो सिंबल किसके लिए है? वो है XOR गेट के लिए. XOR. Now I will give you some shortcut idea about all these gates. Then we will see thoroughly one by one. So you can see here the first one, not. Not मतलब क्या? If I am asking any question like yes no. Not मतलब क्या है? नहीं. मतलब क्या है? You are opposing. It means what? If I am giving the input 0, you will get vice versa of that, inverse of that. मतलब 1 मिलेगा. यदि मैं input 1 दे रही हूँ तो मुझे output क्या मिलेगा? 0. If I am giving any input, you can use here X letter, we can use A letter. If your initial is anything R, you can use any letter. Okay, so if I am giving any input, output will be inverted. That's why we are giving bar on that. You can see here, x के ऊपर bar है. ये जो स्लीपिंग लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? बार बोलेंगे. वेक्टर, वेक्टर. So if I am giving the input x, you will get at the output x bar. If you see its symbol, exactly एक ट्राइंगल जैसे हमने डायोड में किया था, बट वहां पे कैथोड के लिए एक स्टैंडिंग लाइन था, यहाँ पे नहीं है. एंड एज वी आर सेइंग हियर नॉट, यू आर सपोज टू गिव देयर वन बबल. यू कैन सी हियर एक छोटा सा सर्कल निकाला है, ट्राइंगल जहां खत्म हो रहा है, और उसके बाद मैंने एक स्लिपिंग लाइन निकाली है. तो वो जो सर्कल होता है छोटा सा, दैट वी आर सेइंग एज अ इन्वर्जन. दैट बबल इंडिकेट्स इन्वर्जन. मतलब यदि मैं इनपुट इसको कुछ भी दे रही हूं तो वो क्या कर रहा है? उसका इन्वर्ट दे रहा है. क्यों दे रहा है? बिकॉज दिस इज द नॉट गेट एंड हियर वी आर यूजिंग द बबल विच विल इंडिकेट इनवर्स. इनवर्स. अब यदि मैं यहाँ पे इनपुट दूं एक्स बार,
Abhishek, tell me the answer. If I am giving the input here X bar, what will be the output for the NOT gate? I am asking to Abhishek, roll number 27. I asked the question, you are supposed to give the answer. You can see here the first diagram. If I am giving the input X bar to this NOT gate, what will be the output? Output will be X because invert कर रहा है. You can mute yourself. If we are giving any input at the output, you will get invert. यदि मैं X बार दे रही हूँ तो मुझे X डबल बार मिलेगा. X डबल बार का मीनिंग क्या होता है? You can write X. बार का मीनिंग होता है इन्वर्जन. डबल बार का मीनिंग होता है जो वैल्यू है एज इट इज. मतलब मैंने जीरो दिया है, जीरो का डबल बार है तो मुझे जीरो ही मिलेगा. बट जीरो का एक ही बार है तो तुम्हें आउटपुट क्या मिलेगा? 1. लाइक दैट. If we are using the AND gate, in Boolean algebra, AND gate will do the multiplication. You can see if we are giving two input, output क्या मिल रहा है? X into Y. If we are giving three input, you can see the diagram after that. X, Y, Z. We are giving the uh, input 3. So you will get the output that will be the multiplication of that 3. X, Y, Z. 3 inputs. You can see here the mathematical symbol. How? Only the multiplication. So you can give their dot x dot y dot z or you can directly write x y z. तुम डायरेक्टली एक्स वाई जेड लिख सकते हो या फिर डॉट साइन लिख सकते हो. जो तुम मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हो वो तुम नहीं लिख सकते हो. बिकॉज इन आवर computer, when we are using these terms, we are not supposed to use these digits. Only we can use, we cannot use these symbols. Only we are supposed to write directly x y z. मतलब क्या होता है उनका multiplication. If you see its construction or its circuit diagram, how it will be? You can see here दो input दिए हैं x y. After that this is the math, this is the its symbolic structure for the AND gate. एक कर्व लाइक है और वहां पे तुमको आउटपुट मिल रहा है. If you see for the output, OR gate will do the addition. NOT gate क्या करता है? Inversion. AND gate multiplication. OR gate addition. Exactly vice versa of AND मतलब NAND. जो एडिशन कर रहा था ये भी एडिशन करेगा बट उसका इन्वर्जन देगा. सॉरी, AND गेट एडिशन नहीं करता है. AND गेट क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन. तो NAND गेट क्या करेगा? मल्टीप्लीकेशन और उसका इन्वर्जन देगा. Same construction diagram like AND gate, only we are using their bubble. क्यों? क्योंकि n यूज किया है हमने. AND के पहले क्या यूज किया? n. मतलब क्या है? NAND मतलब not plus AND. We will get the NAND gate by using 1 AND gate plus 1 NOT gate. So here NAND gate will do multiplication and NOT gate will do inversion. So output of NAND gate will be inversion of multiplication of number of inputs. If we are giving 3 inputs, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? बार ऑफ x y z. If we are giving 4 input, bar of x y z, w x y z, or you can write x y z a, any 4 input. Okay. After that, NOR. Exactly same like OR. If you see its symbol, only what is the difference? Except one inversion. सेम और का जैसा है वही सिंबल है. ये भी एडिशन ही कर रहा है बट हम और को क्या बोल रहे हैं? नॉर. वी आर एडिंग देयर नॉट गेट. सो यू विल गेट देयर inversion of addition, that is a NOR gate. After that you can see here the XOR. Here XOR is some different because this we are saying as a special. And और नॉट नैंड नॉर इतने समझ में आए हैं? किसी को कोई इश्यू है? यू कैन आस्क मी, otherwise we will move to the XOR and the XNOR. If anyone is having any issue, you guys can ask me right now. समझ में आया है सभी को? प्लीज रिस्पॉन्स एनीवन.
मैम एक बार रिपीट कर दो. Okay, you can see here we are having three types of the basic gates. If you are having the notebook, you can note down there three types of the logic gates. One is basic gate, second is universal, third is special. In basic gate, first three, not and or. In universal, second, NAND, NOR. In special gates, XOR and the XNOR. XOR का spelling होता है EXOR. Instead of that, you can directly write X symbol and OR. XOR का spelling होता है in case they will ask in the exam EXOR. Don't confuse. उसको भी तुम XOR ही बोलोगे, इसको भी तुम XOR ही बोलोगे. XOR को तुम EXOR लिख सकते हो या फिर XOR. XNOR, EXNOR और फिर XNOR. What is the difference between XOR and XNOR? The same diagram, only XNOR में क्या रहेगा, एक inversion रहेगा. Now you can see from the first NOT gate. NOT gate will invert the input. If we are giving the input A, you will get at the output A bar. If we are giving the input A bar, you will get the output A. AND gate. AND gate will take number of input and it will give only one output. Sometimes they will ask about the definition of logic gate in MCQ. Logic gate is defined as, they will give four options. You are supposed to understand. Logic gate will have multiple number of input and only one output. They will give the option 2 input, 1 output, 3 input, 1 output, multiple input, 1 output. All of these, none of these. Or sometimes they will ask any, they will not ask any, all of these options. They will ask directly none of these. You are supposed to understand if they are not giving all of these. The basic definition of logic gate क्या है? Number of input, मतलब multiple input, one output. You can take 2 input, you can take 1 input, you can take number of input. बट आउटपुट जो होता है फिक्स होता है. कितना होता है? ओनली 1. सो एंड गेट को जितने इनपुट मिलेंगे वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे. इफ वी आर गिविंग 4 इनपुट ए बी सी डी, डायग्राम कैसा रहेगा? सेम. ओनली यहाँ पे 2 इनपुट दिए, वहां पे 4 लाइन ड्रॉ करोगे, उसके इनपुट के साइड ए बी सी डी नाम दोगे, आउटपुट के साइड ओनली 1. यू कैन गिव आउटपुट एज वाई. y इक्वल टू ए बी सी डी, मतलब क्या है? उनका मल्टीप्लीकेशन. Or gate will do the addition of given number of inputs at the output. NAND gate. NAND gate will do inversion of multiplication of number of inputs at the output. And NAND gate is addition of NOR gate plus AND gate. NOR gate. NOR gate is addition of OR gate plus NOT gate. It will invert addition of number of inputs. If I am giving 3 input A, B, C, output will be Y equal to bar of A plus B plus C. Like that. XOR. XOR क्या होता है? If in XOR at least there will be one input, you will get output will be 1. And in XOR में हम क्या बोल रहे हैं? If you are giving number of inputs, तुम दे सकते हो कितने भी input, but at least there will be one input that will have the value 1. At that time output will be 1. And XNOR, if there will be at least one input, then output will be 0, क्योंकि exactly vice versa of XOR. XNOR जो होता है XOR के opposite है. XOR में क्या है? at least one input 1 है, एक इनपुट का वैल्यू एटलीस्ट 1 है, तो तुम्हें आउटपुट में क्या मिल रहा है? वहां पे 1 मिल रहा है. नाउ वी विल सी हियर, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट.